तो मैनुअल टेस्टिंग रू स्टार्ट करिवा ठीक अछि वंस हमर कांसेप्ट सब क्लियर हो मैनुअल टेस्टिंग रो ठीक अछि आफ्टर दैट वी विल स्विच टू ऑटोमेशन ओके आउ इन बिटवीन यदि किछि डाउट रहिला ओके सो डू नॉट हेजिटेट हला तमे मते क्वेश्चन पछे परिबो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी ठीक अछि देव सूरज आगे सर टिके लाउडर हुआ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू यस सर ओके ठीक अछि किछ असुविधा नहीं अच्छा मते कहि परियो माने व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग टेस्टिंग रो कोन माने टेस्टिंग कहले कोन बुझुछ एनीवन कैन आंसर मैं स्पेसिफिक गोटे प्रोग्राम को माने टेस्ट करिया देखिए रनिंग तार प्रोब्लेम को रोज और तार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोन फॉल्ट रोज तो चेक करिया टेस्टिंग रो काम था जेटिक जानी ओके बट हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डायरेक्ट टेस्ट करूना ना हम करू ना हम्म କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ huge amount ର ଯଦି କିଛିଟା ମାନେ ଡାଟା ଥିବ हम्म, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମରେ 1 hour ओके ରେ 3 hour ରେ सूरज राइट एटा आंसर के दिले सूरज देले राइट ओके डे तम पाखरे किछ अछि कि आंसर कोन टेस्टिंग कहले कोन ସବୁ बुझुछ ଯେତିକି ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କି ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ୱେବ हम्म ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାପରେ ସେଇଠି ଯାହା ବଗ ବଗ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡା ସେଟା ଫିକ୍ସ କରାହବ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ओके ଟେଷ୍ଟ କେସ୍ ଲେଖିବି ठीक अछि नै हां बुझिले बट हाउ कैन वी डिफाइन टेस्टिंग एक्चुअली आपण कुछ कहि परिबे Testing actually is a method हम्म we can in which we can test the software as per our requirements, actual requirements. करेक्ट 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 ठीक अछि so basically what is testing verifying okay you can also note it down verifying the functionality and behavior of an application against the requirement specification is known as testing or execution of a program okay, with an intention of finding defects. Finding defects is known as testing. Okay, so our intention should always be how can we like find defects, right? First definition is verifying the functionality and behavior of an application against the requirement specification. ଏବେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସୁଥିବ ମନରେ କି requirement specification କଣ right କେହି ମତେ ଗୋଟେ define କରିବେ କି requirement ମାନେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ what do you mean by requirement सूरज देव requirement ମାନେ କଣ ଗୋଟେ एग्जांपल दे परियो कि any example दे परियो कि ନା sir Hotel ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ବିଲିଂ ସେକ୍ସନ ତାର ବିଲିଂ ସେକ୍ସନ କୁ
ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦରକାର ଯୋଉଟା ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ଲିକେସନ ଥ୍ରୁରେ ओके sir, କେବେ programming language. ବେଶୀ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଓକେ ହଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ହେଲା କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ କୁ ଗଲ ହେଲା ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ହାଭିଂ ସମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ कि तुम गोटे कार जो परचेस करने जाओ तुम मन में किसी गोटे थॉट प्रोसेस थी किसी गोटे रिक्वायरमेंट थी कि ओके जमती कि फॉर एग्जांपल इट शुड हैव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इट शुड हैव एयरबैग्स मान रोचे फॉर सेफ्टी पर्पस okay for safety purpose and the seat should be comfortable ठीक अच्छे तुम जो किसी कलर उपर रिक्वायरमेंट थी कि धर तार ट्रॉपिकल मिस्ट दरकार कि अलग किसी मत रेड दरकार कि ब्लू दरकार कि जहाँ भी दरकार ठीक अच्छे कि इट शुड हैव फॉग लाइट्स these are your requirements है ए रिक्वायरमेंट्स को नहीं कि जे भी माने से शोरूम रो सेल्समैन थीबो he will show you कि सर आपनकर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी if you go for this car okay this car will meet all your expectations ହେଲା तो तमर जदि रिक्वायरमेंट सब फुलफिल हैला then only you will purchase that car ठीक अछि नल तो तमे परचेस करबनी हैला एठी भी सेम कांसेप्ट हैला जेतोळे गोटे आसे कोन कहलो गोटे क्लाइंट आसे हम पाखु कि गोटे एप्लीकेशन नै कि से हम कहबो खाली जी अच्छा मते मोर एप्लीकेशन का टेस्ट करिवार अछि हैला तमे करि परिबो कि फास्ट क्वेश्चन कौन रही कि ठीक अच्छे वी विल टेस्ट इट बट तुम रिक्वायरमेंट्स कौन है कारण रिक्वायरमेंट्स यदि न रहिबो डेवलपर कैन नॉट स्टार्ट देयर डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड टेस्टिंग टीम कैन नॉट स्टार्ट देयर टेस्टिंग एक्टिविटी ओके दैट इज फॉर श्योर ठीक अच्छे सो बेसिकली व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अस ओके सो ही हैज टू कम विथ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ठीक अच्छे and we have to test our application or like the software product against the requirement specification ହେଲା requirement specification with me କହିଲି because there is a certain document actually okay so we have a specific document for that is something called as your okay requirement document okay SRD solution requirement document SRD okay बुझा पड़ला डेव हाँ सर किसी डाउट अच्छी ना ହେଲା ଆଉ obviously I mean ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ସଦାବେଳେ ଏଇଆ ରହିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେମିତି डिफेक्ट्स बाहर करवा ठीक अच्छे आम धीरे धीरे पढ़ा आगू कि डिफेक्ट कौन है बग कौन ये सब जिन पढ़ा है तो फर्स्ट डेफिनिशन verifying the functionality and behavior of an application against the requirement specification is known as testing or execution of a program with an intention of finding defects is known as testing है तापर सेकंड हम पढ़िबा ओके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग है 7 principles of testing सो नोट डाउन करो ठीक है फर्स्ट प्रिंसिपल है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ defects obviously this is the first principle okay so this is the reason actually we are doing testing ठीक अच्छे because हम testing ना करिबा then obviously we won't be able to find defects testing shows presence of defects that is the main intention of doing testing so that we can find defects okay and our intention is to deliver a like error free product okay it cannot be 100% error free but our intention is to reduce the errors minimize the defects minimize the defects as much
as we can. Okay, 100% error free application कहि परिबनी, that is a myth हला तमे केमि कहि परिबनी एटा 100% error free सिमती ही परिबनी, but आमे we should try to minimize the defects in such a way that it can be used by the end users, okay, efficiently. ठीक है, so testing shows presence of defects. Okay, second होची, okay, exhaustive testing is impossible. हला जोटा कि मु कहली तमे exhaustive testing कोन, testing with all combinations of input values. हला for example मानि नियो हला धर गोटे तमर एडिट फील्ड अछि, हला मानि गोटे एडिट फील्ड अछि, हला यार रिक्वायरमेंट होची it will accept characters, okay, alphanumeric characters. How यार length रहिबो तमर at least minimum 8 to 50. ठीक अछि, minimum 8 to 50 for example, okay, तमर रहला minimum 8 to 50. Sorry, हला तमर मन कर minimum रहला 8 to 50. What a minute. हला 8 to 50 हला तमे कोन प्रथमे you will enter first 8 characters, then 9 10 11 12 13 14 एमदी करी कोन तमे जीबो की, right, सेमती तो हे परिबनी. So exhaustive testing is impossible. That means we cannot test a particular field with all combinations of input values. That is something we cannot do. हला तो सेति पे हमरो कोन अछि ना टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स अछि, हला प्रोबेबली मु एटा केमते करी प्रथम मु 8 नेली, ओके, तापरे n-1 7 नेली, हला 7 नहीं परिबी, तापरे धर मन करली मु 9 नेली, ओके, ठीक अछि, तापरे 49 नेली 50 नेली 51 नेली, ओके, दिस इज समथिंग आई कैन टेस्ट इट कि इन बिटवीन किछि नहीं परली, धर मन कर 45 कि 35 रैंडमली किछि नहीं परली, हला सेति से कोजी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, हला आमे we cannot test a particular field, okay, with all combinations of input values. सर धर से गोटे रेंज रहिला मु पूरा सब जाक रेंज नै तो टेस्टिंग करि परिबिनी, मते किछरा वाइजली नेबा पड़िबो. धर मोर अछि 8 to 50, probably I can go for n-1 n+1 just to check the boundaries value, okay, boundary values check करिया पे. ताले इन बिटवीन किछ मु नेली, तापर मु अपर किछ नै कि देखिबे जेमि 51 नै कि देखली तो randomly, but we have something called as test case design techniques. We have something called as boundary value analysis. Tharo ki jo range asochi 8 to 50. For example, I can go for 7 8 9 then 49 50 51 hala in between tame kichhi bhi nahi paribo, kichhi asubidha But cover up all numbers. yes because jetole kuch range asuchi na amku always we should check the boundary, okay, जर 7 नेले भी एरर आसीबार अछि 51 नेले भी एरर आसीबार अछि, but if I consider 8 characters then I shouldn't get any error, right? If I consider 50 characters I should not get any error, right? So सेति में exhaustive testing is impossible. So सेति में हम पे we have to follow the test case design techniques, हला सेति से exhaustive testing is impossible, okay. Exhaustive testing बुझा पड़ला ना, because we cannot test with all combination, okay, we cannot test with all combinations or like considering all the input values. That is something we cannot do. ठीक है जी सूरज देव. सर आउथर ठीक हाँ, exhaustive testing माने होची we are not supposed to test a particular field, okay, with all combinations, हैला जेमती गोटे एग्जांपल देली, राइट, गोटे धर मन कर एडिट फील्ड अछि, हैला सेठी माने 8टा रु माने भालो 8टा कैरेक्टर्स तमे एंटर करि परिबो, हला ता रेंज अछि 8 to 50 कैरेक्टर्स, ओके, तो तमे कोन 8 9 10 11 12 एमती करि करि जिवो की, because it will take time na, it will be time consuming. सेति पे we have to follow some techniques actually, okay, we have something called as test case design techniques. जेमती मु कहली, राइट,
for example, wait. For example, देखो गोटे मनकर एडिट फील्ड अच्छे है गोटे एडिट फील्ड अच्छे मनकर मान गोटे एडिट फील्ड अच्छे है तो ये मनकर सी कौन 8 to 50 कैरेक्टर्स ओके बुझा पड़ा एडिट फील्ड मैंने बुझी पार्छ तो प्रथम कौन माने वेयर एक्चुअली वी आर एंटरिंग सम वैल्यूज है तुम एप्लिकेशन निहाती देखी एडिट फील्ड जोटी तार फास्ट नेम लास्ट नेम सिटी रोची एड्रेस रोची है फॉर एग्जांपल 8 कैरेक्टर्स मनकर आमको एंटर करिवार अछि है तो तमें कौन सबू कैरेक्टर्स एंटर करि परिबो कि दैट इज नॉट पॉसिबल राइट धर तुम टेस्टिंग करा तुम प्रथम 8टा कैरेक्टर्स एंटर करिवो तापर 9टा करिवो तापर 10टा करिवो तापर 11टा करिवो एमती करी कौन तुम जीव कि 50 जाए ओके बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग आम पाखे से समय ही नहीं राइट तो यहाँ को कहते एक्जॉस्टिव टेस्टिंग आमे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज एक्जॉस्टिव टेस्टिंग है कि आमे सबू इनपुट्स कंसीडर करि परिबानी है तो आमको किसी गोटे वाइजली आमको टेस्ट करिवार अछि जेमति मु कहली धर किसी गोटे रेंज आसी जाउची ना किसी गोटे रेंज आसी जाउची ताले ए केस आमको कोन करिया पड़िबो आमको वाइजली टेस्ट करिया पड़िबो जेमति मु कहली बाउंड्री वैल्यू चेक करिया पई मु कोन कर परिबी कि मु प्रथमे 7टा कैरेक्टर्स नेली है धर मोर जदि अछि मोर 8 to 50 अच्छी तो मुझे प्रोबेबली नहीं पारिबी 7 8 9 ये मोर बाउंड्री वैल्यू चेक है तापर नहीं पारली 49 50 51 है तो मतलब आज्यूम करिया पड़िबो धर मु 7टा कैरेक्टर्स जदि एंटर करूची जदि मोर एरर मेसेज आसुची देन आई विल आज्यूम कि हां मु जदि 6 कली कि 5 कली कि 4 कली मोर एरर मेसेज देखेबो है धर ये जमी मु धर 50 रु गोटे ऊपर को गली 51 गली एंड इट इज शोइंग सम एरर मेसेज कि ओके यू हैव एक्सीडेड द फील्ड लेंथ मुझे आज्यूम करछि जे हां तो ना नॉट आज्यूम धर 51 कैरेक्टर्स एंटर कला पर जदि मते एरर मेसेज देखौछि तारे मैं आज्यूम करबी कि जे या ऊपर को मु जहां भी एंटर करिवि मते से एरर मेसेज देखेबो हैला सेते से कहै एक्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल सेते हमको वाइजली टेस्टिंग करिया पड़िबो ठीक अछि तबे इन बिटवीन तुम किसी नहीं पार 8 जमी एटा मु इन बिटवीन नेली ना धर 9 नेली 49 नेली राइट तो मतलब आज्यूम करिया पड़े कि मु हां आ किछि भी कैरेक्टर्स मु 8टा रु 50 भीतर मु किछि भी नौची ताले मोर से फील्ड्स एक्सेप्ट करिवो हैला फील्ड वैल्यूज एक्सेप्ट करिवो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक ठीक अछि सेते हेउचे एक्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल है जेतला हमको टेस्टिंग करिया पड़िबो सो वी हैव टू टेस्ट इट वाइजली हैला थर्ड पॉइंट अर्ली टेस्टिंग तो आमे टेस्टिंग जते शीघ्र स्टार्ट करिबा सेते भला हम पाए हैला बुझा पड़छ नहीं फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट फेज रु ही हमें टेस्टिंग स्टार्ट करिया केमति करिया हमें रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करिबा हमें रिक्वायरमेंट रो भी डिफेक्ट बाहर करू कि हमें किसी सजेस्ट भी करबा ओके आई मीन दिस इज योर रिक्वायरमेंट दैट इज फाइन बट इट वुड हैव बीन बेटर कि आकु जदि हमें किसी मॉडिफाई करी कि एमिति करबा देन इट विल बी गुड फॉर एंड यूजर हैला तो मो तमर रिक्वायरमेंट तुमको बुझा पड़ुनी हैला तो तुम पचार रिक्वायरमेंट को हमको रिक्वायरमेंट हमको बुझा पड़ुनी प्लीज टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड तो सेमाने जते तुम रिक्वायरमेंट बुझेबे से समय रे भी तुम किसी डिफेक्ट बाहर कर परबो हैला अर्ली टेस्टिंग सेते कहूची अर्ली टेस्टिंग इज ऑलवेज गुड हैला एटा जे प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग माने हमें जरा टेस्टिंग करूचे हमको ए प्रिंसिपल्स फॉलो करिबार अछि हैला it can be an interview question also ठीक अछि what are the 7 principles of testing okay fourth one is defect clustering okay the defect clustering
that is a small number of modules contain most of the defects detected. ହେଲା defect clustering. Defect clustering कौन? For example, ଆମର ଗୋଟେ Sir, Hello? that is the small number of Suraj, come again. that is the small number of Modules. That is a small number of modules contain most of the defects detected. ହେଲା For example, ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଏଟା କଣ ହେଲା ହେଲା For example, ଗୋଟେ application ଅଛି okay ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଏ particular application କୁ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କର ହେଲା ତ ମାନେ chances are there କି ତମେ କିଛି defects miss କରିଯିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ particular application କୁ କିଛି ଗୋଟେ module ରେ divide କଲି for example ଗୋଟେ ତମ ରହିଲା login module ହେଲା ଧର ଆମ Gmail application ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲେ ଭାଇ Gmail ତମେ testing କର ହେଲା ତ chances are there कि okay you may miss some of the defects but ଗୋଟେ application को ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ module wise divide କରିଦେଲା for example ଗୋଟେ Gmail application ରହିଲା ଗୋଟେ ଆମର କଣ ରହିଲା ଗୋଟେ login module ରହିଲା ଗୋଟେ ରହିଲା inbox ହେଲା ଗୋଟେ ରହିଲା compose email ମନେ କର ଠିକ ଅଛି compose email ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର log out functionality ମାନିନିଅ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସାଇନ୍ କରିଦେଲି ଭାଇ ତୁ login module ଟେଷ୍ଟ କରେ ତୁ inbox ଟେଷ୍ଟ କର तू compose email functionality टाକୁ टेस्ट कर तू log out functionality टाକୁ टेस्ट कर ହେଲା तो ସେମାନେ କଣ they will spend time okay ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ particular application ଗୋଟେ small chunks divide କରି ଦଉଛୁ chances are there कि okay we will find more number of defects ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପୁରା application କୁ ଧରେଇ ଦେବି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କର okay then chances are there that you will miss some of the defects and those can be crucial ସେଗୁଡାକ ମାନେ କଣ ତମର crucial defects ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ତମର production ରେ ଯାଇକି फाटिबो तमर बुझा पड़छ ना नहीं सेति भाई एटा से कहूची जोरा कि हमर रहला फोर्थ पॉइंट राइट कि defect clustering means that is a small number of modules contain most of the defects detected हला गोटे एप्लीकेशन को हम आज ए होल टेस्टिंग न करी कि we can divide that particular application into small chunks that is something called as modules okay and we can test it accordingly. For example, तमे गोटे Flipkart नहीं जाओ हला Flipkart रे भी हमर समझ अछि login functionality अछि logout functionality अछि हला तमर प्रोडक्ट कैटेगरी अनुसार तमे डिवाइड करि परिबो ठीक अछि आउ जने पेमेंट मेथड फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आमे लोडे ऑनलाइन पेमेंट अछि तमर क्रेडिट कार्ड अछि हला तमे यू कैन डू गो फॉर यूपीआई यू कैन गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी हला तमे गोटे पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्मॉल मॉड्यूल्स कर देबा then it will be easier for us to find defects ठीक अछि हमें कारण हमें से पर्टिकुलर मॉड्यूल रे हमें कंसंट्रेट करबा ठीक अछि एबे मु तमको गोटे दिले एप्लीकेशन तुमे कोन टेस्ट करिवो तुमे घाबरेइ जिवो हला किंतु मु तमको पर्टिकुलर पीस ऑफ मॉड्यूल दे देली गोटे पीस ऑफ फंक्शनलिटी देली कि हां सूरज तुमे एटा टेस्ट करो हला कि डेव तुमे एटा टेस्ट करो तो तुमे कोन से समय रे your only focus is to find defects from that particular module जब हम small chunks divide कर दोचे then we will be able to find more number of defects ठीक है that is something called as defect clustering okay fifth point okay pesticide paradox now what is this ହେଲା ତମେ କେବେ ମଶା ଧୂପ ୟୁଜ କରିଛ always हां ଆମେ ମଶା ଧୂପ ୟୁଜ କରୁଛୁ ହେଲା बेले बेले कौन हुए देखियो प्रथम दिन मशा मरीजिबे ହେଲା सेकेंड दिन मशा मरीजिबे किंतु से एते आकस्टम्ड ହେଇଯିବେ तमे मशा धूप लगेथिबो मशा आसिकी से मशा धूप ऊपर बसिबे काहेकि यस से माने म्यूटेड हो जाए हैला पेस्टिसाइड कोन पेस्टिसाइड माने कोन बुझुछ सूरज आ डेव व्हाट यू मीन बाय पेस्टिसाइड सूरज yes sir कोन पेस्टिसाइड माने कोन बुझुछ
ଜାଣିନି ସେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫସଲ କରୁଛୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ କି ପୋକ ନ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ରାଇଟ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ୟୁଜ କରିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ହବ କି ପୋକ ସେମାନେ ମ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯିବେ ହେଲା ସେମାନେ କଣ ସେ ସେମ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦେଇ 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 ଆଜି ମରିଯିବେ କାଲି ମରିଯିବେ ହେଲା ବଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆକଷ୍ଟମ ହେଇଯିବେ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜକୁ ମ୍ୟୁଟେଡ କରନ୍ତି ତ ସେମ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କାମ କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପାୱାର ବାଲା କିଛି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତାକି ପୋକ ମରିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ବି ସେଇଟା ହେଲା ଡୋଜେସ୍ ନହେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିବ କି ନହେଲେ ତମେ କିଛି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କଲ ହେଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ XYZ କମ୍ପାନୀର ୟୁଜ କରୁଛ ଦେଖିଲ ଏଟା କରିଚାଲ ଦେଖିଲ ମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଧର ABC କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଇଚ୍ କଲ ହେଲା କି ନା ମୁଁ ABC କମ୍ପାନୀର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଟା ୟୁଜ କରିବି ହେଲା ତାକି ମୋର ପୋକ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେମ କନସେପ୍ଟ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ପାରାଡକ୍ସ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା pesticide paradox concept ଟା କଣ ବୁଝିଲେ to avoid this okay test cases need to be regularly revised ହେଲା टेस्ट केसेस कौन बुझेबी है एप्लिकेशन को टेस्ट करूचे ओके सो वी हैव टू राइट टेस्ट केसेस है तो आम सेम टेस्ट केसेस को जब बारंबार यूज करवा तो आम ऑलरेडी से टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके डिफेक्ट्स पाई सारिछु है आम तो सेम टेस्ट केसेस को बारंबार एग्जीक्यूट करवा ना तो चांसेस हम कि हमको डिफेक्ट्स न मिल पारे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड दोस टेस्ट केसेस सेवरल टाइम्स है टू अवॉइड दिस test cases need to be regularly revised okay adding new test cases will help find more number of defects ला revised and updated ला बुझा पड़छ ना नहीं तो से गोटे मु सुइटेबल एग्जांपल देली पेस्टिसाइड कि धर मशा धूपर हला आमे सेम जिनसटा जदी यूज करिबा चांसेस हबो कि भाई तमरो पोको मरि न पारे कि मशा मरि न पारे राइट तो सेति भाई एटी भी सेमिति जिंस आमे जो टेस्ट केसेस लेखिबा ठीक अछि आमे धर ताको एग्जीक्यूट कलेनी बहुत थर बट आमे जदी सेम टेस्ट केसेस को बारंबार एग्जीक्यूट करिबा चांसेस हम कि तुमको डिफेक्ट न मिल पारे धर तुम रिक्वायरमेंट चेंज है तुम रिक्वायरमेंट हिसाब से तुमको टेस्ट केस भी अपडेट करार अच्छे कि तुमको किसी नुआ टेस्ट केस भी लिखार अच्छे देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड मोर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बट इफ you know like continue using the same test cases okay then you won't be able to find defects because those test cases have already been executed several times तो बहुत थोड़ा एग्जीक्यूट कर सारे से टेस्ट केसेस ठीक अच्छे है टेस्टिंग इज context dependent टेस्टिंग इज context dependent यार तो कौन देखो हमर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस अछि हला हमर बैंकिंग एप्लीकेशन अछि हमर ई कॉमर्स एप्लीकेशन अछि हमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन अछि हला तो प्रति एप्लीकेशन पई तुमको टेस्टिंग मेथोडोलॉजी टा चेंज करिया पड़िबो हला तमे जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज करके जो लॉजिकल थिंकिंग जो कांसेप्ट नहीं कि तमे टेस्ट करिवो गोटे ई कॉमर्स एप्लीकेशन सेम थिंकिंग सेम कांसेप्ट नहीं कि तुम गोटे बैंकिंग एप्लीकेशन टेस्ट करि परिबो नाही सो यू हैव टू चेंज योर not test cases probably so that thinking that thought process you have to change it हला तमरो सेही कांसेप्ट तुमको चेंज करिया पड़िबो हला सेति टेस्टिंग इज context dependent the way you test an e-commerce application will differ from the way you test a commercial
of the shelf application. ହେଲା commercial. Testing is context dependent ହେଲା या अर्थ होची जेतेला हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आसुची हमको हमर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी चेंज करिया को पड़िबो ठीक अछि गोटे बैंकिंग एप्लीकेशन पई और लॉजिकल थिंकिंग जो कांसेप्ट जो मेथोडोलॉजीस नै कि मु टेस्ट करी गोटे बैंकिंग एप्लीकेशन ताले कि धर गोटे ई कॉमर्स एप्लीकेशन आसु ई कॉमर्स एप्लीकेशन माने धर तमरा जो फ्लिपकार्ट हला मिंत्रा हला तुम जहाँ भी जो माने प्रोडक्ट्स बिक्री करछन ऑनलाइन ठीक अछि धर काले गोटे हेल्थ केयर एप्लीकेशन आसला हला जोडी मेडिकल माने यूज करछन्ती माने हाउ मेनी पेशेंट्स have been admitted कि धर तमर हाँ तमे मेडिसिन शॉप्स भी कहि परिबो कि केते मेडिसिन आसला केते मेडिसिन करला कोन आसला कोन स्टॉक कोन रहला यस तो ए सब जिंस पई हमको डिफरेंट टेस्टिंग मेकानिजम्स डिफरेंट टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमको आपणेबा को पड़िबो हला हम सेम टेस्टिंग कॉन्सेप्ट को नै कि सब एप्लीकेशन को टेस्ट करि परिबा नाही सेते से कहै टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू टेस्ट ठीक है हेलो हाँ सूरज को क्वेश्चन कोन अछि सर आउट आउथरे बुझेबी तमे कोन कोन एप्लीकेशन यूज करछो सूरज कहलो हाँ कोन कोन एप्लीकेशन यूज करिछो माने शॉपिंग अछि ना हैं शॉपिंग अछि ना शॉपिंग शॉपिंग ऐप ना हेलो हाँ तमे नियाती फ्लिपकार्ट यूज करिछो आगे मिंत्रा यूज करिछो आगे अच्छा तमे केबे कोनसी वेबसाइट यूज करी किछि बुक करिछो फॉर एग्जांपल होटल बुकिंग की फ्लाइट बुकिंग बस आगे बुकिंग करिछो राइट तमे दीटा एप्लीकेशन भितर किछि डिफरेंस पाइछो ना माने सेम ही अछि एप्लीकेशन डिफरेंस रोच डिफरेंस रहउछि ठीक अछि कोन डिफरेंस रहउछि सर तार प्राइस अधिक रोच तार प्राइस कम रोच प्लस तार 5 रेटिंग रोच तार 4 रेटिंग रोच नाही मु माने तमर बुकिंग साइट्स पे कोन तमर गोटे बुकिंग साइट रहिला आ तमर जो तमे जो शॉपिंग करूछो कहला फ्लिपकार्ट हला किछिटा तो एप्लीकेशन डिफरेंस पाइथियो कोन डिफरेंस देखिछो बोली मु पचारुछि कोन डिफरेंस अछि दिटा एप्लीकेशन रे प्रोडक्ट डिफरेंस रोच प्लस प्राइस डिफरेंस रोच अच्छा प्राइस प्राइस डिफरेंस इज ए सेपरेट थिंग ठीक है प्राइस तो तुमको डिफर करिवो तमर प्रोडक्ट को नहीं कि तमर को होटल चूज करछो कोन करछो को फ्लाइट यूज करछो बट बेसिकली दीटा एप्लीकेशन भीतर डिफरेंस कोन अछि धर मु तुमको देली गोटे तमर कोन या सेटा मेक माय ट्रिप हला मेक माय ट्रिप गोटे एप्लीकेशन रहला आ तमर फ्लिपकार्ट गोटे एप्लीकेशन रहला कोन डिफरेंस अछि से दीटा एप्लीकेशन रे सेटा तो बेसिकली नेट माइट्रिक तो हमर होटल टाइप रो होटल बुकिंग हाँ ट्रैवलिंग रो ऑप्शन होची तमे जिते गोटे प्रोडक्ट किनुच तमे केबे हेले सेठी चेक इन चेक आउट एगुड़ा सब पकाउच कैलेंडर यूज करूच कि मते आगे ए पर्टिकुलर डेट रे ही मते प्रोडक्ट आसीबा दरकार आगे करूच कि आगे फास्ट डिलीवरी भी अछि करूच कहूच ना करू न कहूच करूची सर तमे केमती धर तमे गोटे फ्लिपकार्ट गोटे परचेस कले मोबाइल तमे सेठी चेक इन चेक आउट ए डेट सब एंटर करूच कि आगे कि करूच आगे अरे अब चेक इन चेक आउट न थाए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन रे ना फास्ट डिलीवरी तो था ना 2 days हाँ 3 मु तुमको days फ्लिपकार्ट पे पचारुछि फ्लिपकार्ट रे करूच कि ना फ्लिपकार्ट अमेजन Amazon रे अछि चेक इन चेक आउट
चेक इन चेकआउट अच्छी प्राइम मेंबरशिप रे 2 days रे आसुची आ प्लेन अमेजन रो खाली आसुची 7 days डेज रो एडा रो हाँ तमरो जो बुकिंग साइट्स जाक अछि सेठी तम चेक इन चेक आउट अछि राइट तमे को केबे होटल चेक इन कला केबे होटल चेक आउट कला कि तमरो धर फ्लाइट बुक करछ हला तमरो राउंड ट्रिप करिवो कि वन वे करिवो बट तमे गोटे ई कॉमर्स एप्लिकेशन टेस्ट करछ तमे कैलेंडर किछि अछि कि देयर इज नथिंग लाइक कैलेंडर राइट कि डेट पिकर किछि न थाए यू ओनली चूज ए प्रोडक्ट यू आर एडिंग इट टू द कार्ट एंड यू आर डूइंग कौन परचेजिंग यू आर प्लेसिंग दैट ऑर्डर बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर पेमेंट मेथोडोलॉजी तो एटा हूँ से कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट माने सी कहूँ गोटे ई कॉमर्स एप्लिकेशन को तमे जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं कि टेस्ट करिवो हला गोटे हेल्थ केयर एप्लिकेशन हला कि गोटे बैंकिंग एप्लिकेशन हला तमरो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी ता तुमको चेंज करिया पड़िबो हला तो टेस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लिकेशन you are going to test whether it is a banking application or whether it is an e-commerce application whether it is a healthcare application whether the application is related to insurance हला तो मतलब एप्लिकेशन टा चेंज होची तो हमको टेस्टिंग मेथोडोलॉजी और टेस्टिंग कांसेप्ट को भी चेंज करेबा को पड़िबो ठीक अछि that's why it says testing is context dependent the way you test an e-commerce application will differ from the way you test a commercial off the shelf application ठीक अछि last We differ from the way you test. yeah differ from the way you test a commercial off the shelf application हला last point होची absence of errors is a absence of errors is a fallacy हला या अर्थ कोन फॉर एग्जांपल गोटे एप्लिकेशन हम पाखु आसिला ठीक अछि तार जदि बेसिक फंक्शनालिटी काम करूनी फॉर एग्जांपल तुमको गोटे आसिला माने जीमेल एप्लिकेशन टेस्ट करिया पे हला तमे तमरो लॉगिन टाइम काम करूनी हला Sign in. हाँ धर गोटे यूजर कैनॉट रजिस्टर लाइक तुम लॉगिन फंक्शनालिटी काम करूनी तुम टेस्टिंग करि परिबो कि कंपोज ईमेल कि तुम इनबॉक्स फंक्शनालिटीज किछ तुम करि परिबो नाही राइट तो बेसिक फंक्शनालिटी काम करूनी दैट मींस दैट पर्टिकुलर एप्लिकेशन इज नॉट फर्दर टेस्टेबल हला सेटा से कुछ एब्सेंस ऑफ एरर्स इज ए फॉलेसी ओके से हमें करिया फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स doesn't help if the application itself doesn't fulfill okay users needs and requirements absence of errors is a fallacy finding and fixing defects a waste of time okay finding and fixing defects doesn't help if the application itself doesn't fulfill users needs and requirements ओके या अर्थ होची धर तुम जदि बेसिक फंक्शनालिटी काम करूनी गोटे एप्लिकेशन हला आमे ताको नै कि कोन टेस्ट करबा ताते बेसिक फंक्शनालिटी ही काम करूनी तार जोटा कि मेजर फंक्शनालिटी काम करूनी हला तो आमे जदि से एप्लिकेशन को नेबा फॉर फर्दर टेस्टिंग इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम ओके सेथिबे आमे करूछु गोटे ताको कहउचंदी स्मोक टेस्टिंग हला जोटी कि आमे बेसिक और क्रिटिकल फंक्शनालिटी चेक करछला कोन पढिबा डिटेल हला स्मोक टेस्टिंग कोन जोटी कि आमे बेसिक और क्रिटिकल फंक्शनालिटी चेक करूचे ओके दोज आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट जदि सेगुडा को काम करूची दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट जदि गोटे पर्टिकुलर एप्लिकेशन रो बेसिक और क्रिटिकल फंक्शनालिटी काम करूची देन ओनली वी कैन कंसीडर दैट एप्लिकेशन फॉर फर्दर टेस्टिंग okay we can go in depth testing ठीक अच्छे तो these are like 7 principle of testings okay 7 principle testing एटा बहुत important okay in interview they may ask okay can you please explain what are the 7 principles of testing then you have to define in this way okay first was testing shows presence of defects exhaustive testing is impossible early testing defect clustering that is a small number of modules contain most of the defects detected
तमें बुझे पारिबार भी अच्छे ओके फॉर एग्जांपल गोटे एप्लिकेशन में आज होल टेस्ट करी आई मे नॉट बी एबल टू फाइंड मोर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स chances are there कि okay the testers can miss a crucial defect but if a application can be divided into small modules, okay, small chunks, okay, and if we start testing those small modules then we can find more number of defects. Pesticide paradox, it out a situation, okay, this is a situation. To avoid this, the test cases need to be regularly revised, okay, and updated, okay, adding new test cases help find more number of defects है कारण गोटे पेस्टिसाइड भी बारंबार यूज करी कीटनाशक औषध हो पारे कि से कीटनाशक औषध आज काम करुच्ची काली काम न करि पारे कारण जो भी कीट पतंग अच्छा से निजक म्यूटेट कर फॉर एग्जांपल देखो कोरोना वायरस आसला आम कहीं फर्स्ट डोज ने सेकेंड डोज ने बूस्टर ने कौन पे कारण से निजक म्यूटेट कर फास्ट डोज टा काम करगला हुए तो काली काम न कर पारे से सेकेंड डोज ने बूस्टर ने राइट हाँ से यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है तमें यदि सेम टेस्ट केसेस को नहीं बारंबार एग्जीक्यूट कर it will not help you find more number of defects because those test cases have already been executed multiple times, several times. तो आमको कौन आम टेस्ट केसेस रेगुलरली रिवाइज करार अच्छी अपडेट करार अच्छी जब किसी रिक्वायरमेंट अपडेट होची सब टेस्ट केस भी अपडेट करार अच्छी आमको किसी नुआ टेस्ट केसेस लिखार अच्छी then only we can find more number of defects. Now sixth point which is very important, testing is context dependent. कहली तुम एप्लिकेशन अनुसार आमको टेस्टिंग मेथोडोलॉजी चेंज करिया पड़िबो मोर ई कॉमर्स वेबसाइट को जेमिति टेस्ट करिवि से थिंकिंग प्रोसेस से कांसेप्ट से लॉजिकल थिंकिंग ने कि मोर बैंकिंग एप्लिकेशन को टेस्ट करि परिबि नहीं मोर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मते चेंज करिवा को पड़िबो ठीक अछि जो लास्ट पॉइंट absence of errors is a fallacy हमर जदी बेसिक फंक्शनलिटी काम करूनी we should not consider that application for further testing. It will be a waste of time, right? usually So these are the 7 principles of testing. ठीक अच्छे? okay ना कौन डाउट अच्छे? देव. ना सर कुछ नहीं Okay. किसी डाउट अच्छे मुझे पचारा before we proceed to any other topic. देव और कौन सूरज थी ना कौन ना? Okay. देखो जिते गोटे आम ऑर्गेनाइजेशन रे काम करुचे है आमको गोटे किछिटा प्रोसेस फॉलो करिवार अछि है जेमिति गोटे गोटे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कौन एक्टिविटी करा हुए डेव आ सूरज सॉरी सूरज सर कौन बोला गोटे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे कौन आम एक्टिविटी करुचे व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कौन करुचे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कौन होची सर एप्लीकेशन गुड़ा डेवलप करा एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन खाली मोबाइल एप्लिकेशन नहीं वेब एप्लीकेशन आउ कौन होची तापर सेटा टेस्ट करा होची टेस्ट करा होची तो मेनली आम कह कि गोटे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करुचे आउ टेस्टिंग करुचे राइट तो गोटे गोटे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे हला मतलब आम गोटे किसी एक्टिविटी करुचे वी हैव टू फॉलो ए सर्टेन प्रोसेस हला एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रन विदाउट ए स्टैंडर्ड प्रोसेस हला तुमको जदि गोटे किछि कहली काम करिया पे तुम गोटे प्रोसेस फॉलो न करिवो हला तमे से ठीक से करि परिबो नै हाँ process we should follow the process there has to be some protocols है से protocols को follow करके हमको काम करियार अछि हमको गोटे काली आसला गोटे एप्लिकेशन डेवलपमेंट पे मन इच्छा डेवलपमेंट करि परिबो कि मन इच्छा टेस्टिंग करि परिबिनी है तो we have to follow a certain process तो डेवलपमेंट पे हमर गोटे अछि
किछटा मॉडल्स अछि हला जाको हमें कहू SDLC ओके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ठीक अछि तो यार फर्स्ट मॉडल होचे हमर जोटा होची वाटरफॉल मॉडल बाकी ओडिया में हला तो फर्स्ट कौन होचे हमर रिक्वायरमेंट होच हला रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऐसे नोट डाउन करथो ठीक अछि रिक्वायरमेंट एनालिसिस मो नोट भी दे देबी किछ असुविधा नहीं ओके रिक्वायरमेंट एनालिसिस देन हमर एगो फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस तापर एगो फिजिबिलिटी स्टडी हला तापर एगो डिजाइन ओके डिजाइन तापर एगो कोडिंग ओके तापर एगो टेस्टिंग तापर एगो इम्प्लीमेंटेशन तापर एगो मेंटेनेंस हला हला सो प्रथमे हमर कोन रहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस document पेमेंट बुझछ ये डायग्राम टा टिके ड्रॉ कर दियो हला इट इज गुड एक्चुअली फॉर यू हला तो प्रथमे हमर कोन रहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस राइट हम गोटे गोटे करी बुझो ठीक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस ठीक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमर फर्स्ट रहला हला सेटा कोन प्रथमे रिक्वायरमेंट एनालिसिस मु प्रथमे कहली गोटे एप्लीकेशन जतले गोटे हमर डेवलपमेंट पे आसे कि टेस्टिंग पे आसे ठीक अछि we should need the requirements हला requirement analysis so who will gather these requirements this idea chi client will give us but who will like gather these requirements from the client business analyst or product owner. correct correct okay so product owner I mean is mainly responsible for providing requirements but business analyst will get the requirements okay so it is the job of business analyst okay so this is done by BA mainly okay business analyst there are mainly actually our on-site coordinators with Hanti okay I mean their job is to coordinate between the client and the offshore resources माने इंडिया रे रही काम करन धर मोटे कैनेडियन क्लाइंट पे काम करछु तो आम टीम रो जने जाइथिबो ऑन साइट को जे कि कोऑर्डिनेट करिवो बिटवीन क्लाइंट एंड ऑफशोर रिसोर्सेस हला
So basically, this is done by BA, okay, business analyst. Okay, so he has to gather all the requirements from the client. Okay, whoever is the client, okay, the job of business analyst is to gather all the requirements from the client. Okay, so now once we gather the requirements, okay, so we have to do feasibility analysis. Feasibility analysis. First is like requirement analysis, then feasibility analysis. Eta kiye kore? Any idea? Priyanka? Requirement analysis. Not requirement Uh, analysis, feasibility analysis. Project manager. Who else? Project manager. Knowledge team. Project manager basically मतलब लागू sir. Feasibility analysis. Okay. So basically it is done by a group of people. Okay. Not only project manager. Okay. So it is done by a group of people. Okay. First asla tamoro ala software architect. हाँ. Okay. So he says about the technologies. He says about the technologies which are good for the project. ହେଲା। For example, there are କିଛି application asila. Okay. That is the job of a solution architect or software architect. He says about the technologies which are good for the project. कि धर आमे Java use करिवा, कि .NET use करिवा, कि Python use करिवा, कौन programming language use करिवा, database रे आमे कौन use करिवा, Oracle use करिवा, कि आमे MongoDB use करिवा, कि Hadoop use करिवा. Okay, so that is the job of a solution architect or software architect. He says about the technologies which are in trend or like which are good for this particular application. ठीक ଅଛି? Then HR. Okay, HR says about the resources available for the project. Okay, HR says about the resources available for the project. I'm a technology decide करूँ, but a technology रे हम पाखे resources option थी ना. For example, ना हमें कल क्या होगा, we will be using Python. तो Python पाई मो पाखे resource अच्छी ना. जदि अच्छी धर इंटरनाल रिसोर्सेस जदि अच्छी मुझे नहीं पार्ली अलग कौन से प्रोजेक्ट को नहीं आस पार्ली जदि से पिला अवेलेबल अच्छी जदि नहीं देन ऑब्वियसली वी हैव टू डू एक्सटर्नल हायरिंग करिया पड़िबो जोड़ा कि तमरा बाहर जॉब्स देखुछ कहीं रिसोर्सेस ना से लोग खोजुचंदी जो पिला आसिक प्रोजेक्ट रे काम कर परिबो राइट तो HR he says about the resources available for the project. But feasibility माने कोन हम देखुचे कि हम पाखरे कोन मेन पावर अछि ना नाही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल अछि ना नाही हला ए सब जिंस हमकु माने एनालिसिस करय पड़िबो हला कि हम गोटे प्रोजेक्ट आसुची हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करिबा हाउ मच इट इज feasible ठीक अछि so it is done by a group of people. Software architect he says about the technologies which are good for the project. HR says about the resources available for the project. Then we have something called as finance manager. Finance manager he estimates the cost of the project. He estimates the cost of the project. That is the job of the finance manager. केतिकी कॉस्ट हमको दरकार गोटे प्रोजेक्ट को डिलीवर करिया पे तर हम पांचटा रिसोर्सेस नले पांचटा रिसोर्सेस रो बिलिंग रहइबो बुझा पड़छ ना नहीं हाँ
तो तुम किसी पेड टूल यूज कल तापाई भी कॉस्ट डिवाइस कॉस्ट होची हला सो बेसिकली वी हैव टू estimate the cost of the project and that has to be done by finance manager will estimate the cost of the project okay तापर जो प्रियंका कहला प्रोजेक्ट मैनेजर ओके सर प्रोजेक्ट मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर दी जण ही मतलब अलगा अलगा फीचर्स थिबो कि गोटे प्रोजेक्ट रे प्रोजेक्ट मैनेजर ही फाइनेंस कैलकुलेशन भी करि पारंती depends हला it varies from like project to project okay बट ओके फाइनेंस मैनेजर तार मेनली से केवल गोटे प्रोजेक्ट पे थोड़ा न रही से देखो फाइनेंस मैनेजर जी है ता अंडर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थिबो तार काम है कि भाई तू कॉस्ट काढे प्रोजेक्ट है कि धर एतिक रिसोर्सेस मनकर आम हायर करुचु तो तांकर बिलिंग रेट केते रहइबो किसी आम जदि पेड टूल यूज करूछु डिवाइस कॉस्ट सबु से कैलकुलेट करबो ठीक अछि ताले सिना आम कैलकुलेशन करि परिबा राइट राइट project manager GA माने he has to know basic knowledge of all these people okay project manager he has to know basic knowledge of all these people because he has to manage the project right ओके डोमेन नॉलेज आल्सो राइट हाँ he has और to know basic knowledge of all the people ओके माने तार डेवलपमेंट ऊपर किछि नॉलेज थिबार अछि टेस्टिंग ऊपर किछि नॉलेज थिबार अछि हला माने हायरिंग ऊपर टिके नॉलेज थिबार अछि कॉस्ट एस्टिमेशन ऊपर टिके नॉलेज थिबार अछि प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू नो इन द एंड माने कि he has to be a pro but he has to know basic knowledge of all these people ओके एंड फाइनेंस मैनेजर जो एक्चुअली सेटा फाइनेंस टीम से तांकर गोटे थिबो और से माने मोर ओवर सब प्रोजेक्ट्स रो कैलकुलेशन माने फाइनेंशियल वाइज कैलकुलेशन बजटिंग करूथिबो yes ओके okay so that was the feasibility analysis it is done by a group of people software architect HR finance manager project manager okay after feasibility analysis what we have so we have to design it right again I'll go I have to design it स्क्रीन समस्त देखा जाउछि ना सर हाँ सर Yeah. Now design again it is of two types okay ହେଲା okay रहला तमर HLD ହେଲା जोरा को हमें कहूछ हाई लेवल डिजाइन ओके हाई लेवल डिजाइन HLD हमें कहूछ ठीक अछि ओके आउट रहला तमर LLD लो लेवल डिजाइन मोर नोट्स दे देबी ओके नोट्स दे देबी किछ असुविधा नहीं ହେଲା ओके व्हाट डॉक्यूमेंट दे देबी ठीक अछि PDF भी देखि सुनो okay so it is of two types okay it is of two types okay one is HLD जोरा के हमें कहूछ हाई लेवल डिजाइन और रहला हमर LLD जोरा के हमें कहूछ लो लेवल डिजाइन
डिजाइन ठीक है ହେଲା तो HLD टा किए करे ओके HLD is done it is done by a it is done by system architect Oh. okay so he says about the software in brief he says about the software in brief LLD okay it is done by a senior developer okay so he has to so he gives the details he gives the details okay in terms of flowcharts in terms of flowcharts for example मानिनियो गोटे check धर गोटे HLD रे एग्जाम मनकर देबा गोटे मन होला धर हमर गोटे रहिला एठी होला एटा तमर लॉगिन होला बुझा पड़ला तो होला एठी तमर मनकर रहिला गोटे आ गोटे फंक्शन रहिला धर तमर धर मु जीमेल रो नउछ होला एटा तमर रहिला इनबॉक्स फंक्शनालिटी चेक करिवो होला इनबॉक्स फंक्शनालिटी चेक करिवो ठीक अछि तापर एटा रहिला तमर कंपोज ईमेल रहिला होला कंपोज ईमेल जोटा कि तमे यू आर सेंडिंग द ईमेल होला आ एटा तमर रहिला लॉग आउट रहिला एठी log digital creation गोटे शॉर्ट एग्जांपल मु नउछि लॉग आउट होला एटा हम कम बुझो धर हम लॉगिन कला परे इधर वी कैन डू like check the inbox okay we can read the messages or we can send email to a particular recipient ठीक है हमें गोटे मेल पठे परिया गोटे जहाँ भी recipient को हला तापरे we can go for logout हला एटा एटा धरो मने HLD हला किंतु जेतले LLD आसुची ना LLD but it has to be in detail actually for example तुम login रे तुम कौन दरकार तुम login रे तुम दरकार यूजर नेम दरकार हला यूजर नेम दरकार से सब डिटेल लिखा थे यूजर नेम दरकार हला तापरे हमको दरकार कोन पासवर्ड दरकार अछि पासवर्ड दरकार तो सेटा कोन सेटा गोटे डाटाबेस रु आसुथबो नियति गोटे डाटाबेस थिबो फॉर एग्जांपल एटा गोटे डाटाबेस रहला मोर हला एटा होची डीबी मोर मोर फॉर एग्जांपल हला माने नियो एटा एटा होची मोर डीबी हला ए डाटाबेस मोर रिट्रीव हेके आसुची फॉर एग्जांपल हला तापरे ये गोटे लिंक थी जन सहित धर आम यूजर रेजिस्ट्रेशन गोटे रहा कारण डाटाबेस स्टोर के गोटे यूजर रेजिस्ट्रे गोटे यूजर रेजिस्टर कर कौन डाटाबेस स्टोर हम जो मुझे लॉगिन कर मत डाटाबेस रिट्रीव कर यूजर नेम पासवर्ड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन अगेन आई विल गो आई कैन रीड द मेसेजेस एंड आई कैन कंपोज ईमेल आई विल गो फॉर लॉग आउट है तो आमर दीटा डिजाइन गोटे HLD रे LLD रे LLD टा कोन इट हैज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन डिटेल एक्चुअली हैला after retrieving from the DB यस माने मो एग्जांपल देली माने मो गोटे स्पेसिफिक एग्जांपल एट धर खाली लॉगिन तमे एटा जे HLD रे हला खाली तमे बुझिला गोटे यूजर बुझिला कि हम मते लॉगिन करबार अछि आफ्टर लॉगिन मु इधर इनबॉक्स जाय कि मोर मेसेजेस रीड कर परिबी नले कंपोज ईमेल जाय कि मेल सेंड कर परिबी लॉग आउट कली हला बट LLD रे मतलब इट हैज टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन
तो लॉगिन करछो को टू डिटेल्स आसुची तर यूजर हैज टू फर्स्ट register. Okay, then that details will go and that details will go and it will get stored in database. Just I'm login करूची, the information has to be fetched from database. Username, password हम database ରୁ fetch करिवार अछि, match करिवो सब ठीक ठाक अछि ना नहीं. यदि match होनी it will throw error. यदि match होची successful login हबो. After successful login, user has to click on this button ताकि से messages read कर परिवो. सब डिटेल रे थिबो एलएलडी रे हला. So सेतिबे सेटा कहूची it has to be provided by the senior developer. Okay. The profile. Yes. I erase कर दे बेटा मुझे. Okay. तो design पर coding and testing. Okay. Coding and testing. And obviously we know coding is done by the developers. Okay. Coding is done by the developers and testing is done by the test engineers. Testing is done by the test engineers. एथिरे किसी डाउट नथियो because obviously हम जानते coding कौन. Okay, basically they have to write code. Okay, and we have to perform testing, right? Test engineers, they will perform testing. Okay, once the application is ready. The application they are Implementation. So it is done by implementation. It is done by the build team. ठीक है गोटे एप्लिकेशन में तुमरो डेवलप हैला हैला सेटा जाय कि कोन तुमको क्लाइंट साइड रे डिप्लॉय करिवार अछि गोटे एप्लिकेशन हे गेला हैला सेटा ताकू सर्वर रे डिप्लॉय करिवार अछि हैला सेटा की करियो ना बिल्ड टीम करियो. इट इज डन बाय द बिल्ड टीम. ओके, they train some people of the client side about the project. तुम एप्लिकेशन डेवलप कला ताकू तुम जाके डिप्लॉय करिवो कोठी क्लाइंट साइड डिप्लॉय करिवो सर्वर डिप्लॉय करिवो खाली डिप्लॉय कला अपन बुझेया को पड़िवो कि भाई ए प्रोजेक्ट एमिति काम करे हमको एठी जिबार अछि तुम एमिति यूजर रजिस्ट्रेशन करि परिवो तुम एमिति लॉगिन करिवो फंक्शनलिटी तुम बुझेया को पड़िवो का को क्लाइंट को हैला. तो सेटा काम कोन सेटा होची implementation. Okay, so basically we have to deploy the software application and we have to make them understand also how to use it. Okay, कारण से मन नुआ देखु चंती ना सब जानी ना तमे डेवलप करछ तो it is your responsibility to explain them, to make them understand, to train them हैला. So this is something which is happening during implementation. It is done by the build team. They train some people of the client side about the project. Okay, next asla तमरा maintenance. मेंटेनेंस करले धरो तमे प्रोजेक्ट डेवलप करी कि देले हला काली की क्लाइंट कहला मते टिके चेंज करिवार अछि हला ए फंक्शनल मते टिके चेंज करिवार अछि ई धरो ए फंक्शनल मते हटेवार अछि एटा मते दरकार नै. तो सेटा कोन से माने चेंज पे रिक्वेस्ट करचंदी तो ताकू कहउचंदी CRs, चेंज रिक्वेस्ट्स हला. तो in this page, okay, in this page, okay, project manager, okay, in this page project manager creates a team. Okay, creates a team called as CCB. Okay, CCB दाको हमें कहू change control board. So they receive software change requests from the client.
तापर हमको से काम करिवार अछि से अगेन सेम जिंस हला हमको एथिरे काम करिवार अछि हला तो फर्स्ट हमर कोन रहला डिजाइन पोरे तब हमर रहबो कोडिंग एंड टेस्टिंग हला एटी हमर रहला या पर हमर रहला कोडिंग एंड टेस्टिंग टेस्टिंग हला तापर रहला इम्प्लीमेंटेशन implementation at last हमर रहला मेंटेनेंस हला बुझा पड़ला किसी डाउट अछि वाटरफॉल मॉडल रे अब सब जानिले ना को टीम रो काम कोन हाँ सर देव सूरज बिल्कुल किसी डाउट अछि नहीं सर yes or no sorry मु सुनी पारुनी I can't hear you properly नो सर नो सर ठीक अछि तो जहां भी पढ़ा होछि प्लीज जाई कि प्रैक्टिस करो हला घरे घरे एटा पढ़ो रिवाइज करो ओके एटलीस्ट जो डेफिनेशन जाओ कोछि ताकू तमे देखो हला कांटे जेते गोटे इंटरव्यू दोउछो सो यू हैव टू डिफाइन इट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट ठीक अछि तुम जने पचाला ओके व्हाट इज टेस्टिंग सो यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट हला there are 7 principles of testing कोन waterfall model ऊपर किछ आईडिया अछि कि सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस फेजेस हला रिक्वायरमेंट एनालिसिस रे कोन होउची डिजाइन रे कोन होउची कोडिंग रे कोन होउची इंप्लीमेंटेशन माने हमें कोन बुझुचे हला मेंटेनेंस रे हमर कोन होउची हला ठीक अछि दैट्स इट फॉर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग सर नेक्स्ट क्लास के दिन नेक्स्ट क्लास हमर अछि ना व्हाट्सएप ग्रुप सेते जणा हबो ठीक अछि अजितेश से जणेबे ठीक अछि सर जो नोट्स आजिर क्लास रो सेटा कोठु हमें देखि परिबो असुविधा नहीं तुम दे देबो किछ असुविधा नहीं हला हाँ ओके मैं मन कथा ही जिबी केमति कोन नोट्स दिया हबो मु पठे देबी किछ असुविधा नहीं ठीक अछि सर गोटे डाउट एथिरे कि जो डेवऑप्स टीम थाउचंदी से माने इम्प्लीमेंटेशन रे जिबे कि मेंटेनेंस रे डेवऑप्स टीम रो काम कोन प्रथम कथा कहलो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस हां तो से माने को टीम रे जिबे भाबुछ से माने ऑब्वियसली एक्चुअली प्रोजेक्ट रे तो इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉय करंती हां हाँ इम्प्लीमेंटेशन रे गले ना इम्प्लीमेंटेशन रे ओके गले ना कि से ओके माने किछ हाँ टूल यूज हाँ करतोंदी हां सर नॉट टेस्टिंग मेंटेनेंस एक्चुअली मेंटेनेंस रे तमरो अलगा लोक रहइबे हला मेंटेनेंस माने कंट्रोल डेटाबेस मेंटेनेंस आउ सपोर्ट से टाइप रहइबो कि एप्लिकेशन डिलीवर कलो हला एप्लिकेशन डिलीवर हाँ हाँ कला पर धरो अलगा किछि चेंजेस आसुची ना चेंज रिक्वेस्ट आसुची मुझे कहली हाँ क्लाइंट रे सीआर हाँ 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 सीआर चेंज रिक्वेस्ट तो हाँ सेटा होची मेंटेनेंस हमें सीआर रिसीव करले अगेन वी हैव टू प्लान इट आउट अगेन इट हैज टू गो थ्रू एवरीथिंग हाँ 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 ना ना से तो टेस्टिंग टीम कला नॉट डेवऑप्स रा काम हैला दे आर देयर
से माने प्रति के प्रोसेस ओरिएंटेड है से माने डिप्लॉय करिवे ठीक से डिप्लॉयमेंट हैला कि नाही डिप्लॉयमेंट हो संगे संगे टेस्टिंग स्टार्ट हेबार अछि डेवऑप्स रो काम केवल इंप्लीमेंटेशन नुह हला हमर दिले गोटे डेवलप होची हमर बहुत गुडे एनवायरनमेंट थाए गोटे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हला गोटे क्यूए Production. एनवायरनमेंट स्पेसिंग हला प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन ना एटा प्रोडक्शन पई भाबिने हला किंतु टेस्टिंग जो पर्टिकुलर सर्वर रे समय डिप्लॉय करिवे प्रथम डेवलपमेंट सर्वर डिप्लॉय हेबो सेटा डेवलपमेंट रहला समय तांगा यूनिट टेस्टिंग कले जा कले तारे क्यूए सर्वर डिप्लॉय किए करिवो डेवऑप्स टीम करिवो आमो काम टेस्टिंग करिवा वी आर नॉट रेस्पोंसिबल फॉर डिप्लॉयिंग कोड्स कारण आमो द्वारा भूल हो जाय पारे को फाइल कोड नै कि पकेबी मोर आईडिया नै से माने जानि को फाइल रे को पर्टिकुलर फोल्डर रे पड़िबो तो सेमान काम हो सेटा दे विल डिप्लॉय they will make the environment ready then we are responsible for testing भाई हमको environment ready करके दियो हमें testing कर हाँ testing and we will find defects and we will report those defects and it is our responsibility to get those defects fixed also खाली defects raise करले हबनी हमको से डिफेक्ट्स टाको फिक्स भी करेबा को पड़िबो वी हैव टू फॉलो अप विद द डेवलपर्स वी हैव टू गेट इनटू अ डिफेक्ट ट्रियाज कॉल तांग से डिस्कशन करिया पड़िबो तांग डिफेक्ट्स बुझिया को पड़िबो एमिति आसे कि आमे डिफेक्ट कया समय ना एटा डिफेक्ट नुह अगेन वी हैव टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हां तमे मीम देखो दिबो ना बेले आसे इंटरनेट रे डेवलपर कोची इट इज वर्किंग फाइन ऑन माय मशीन तो टेस्टर कोन कोची we are not going to deliver your machine to the client right it has to work on every machine से टाइप रो जुक्ति तर्क भी हुए और कॉन्फ्लिक्ट हुए डिफेक्ट रियाज रे राइट हम पे डिफेक्ट हम पे डिफेक्ट एटा रिक्वायरमेंट या कोची रिक्वायरमेंट हिसाब रे काम करूनी developer thinking is if it is working then it is fine. मु सेथि में सोचि कोची वाला डेवलपर को मोर रेस्पोंसिबिलिटी हो जोटे टेस्टर रो बिकॉज़ वी आर लाइक द लास्ट फेज ऑफ द प्रोडक्ट we have to be more responsible it is our duty to deliver a quality product to the customer right तो तुम जो डेवऑप्स टीम टा इंप्लीमेंटेशन फेज रे रहिबे हला सेमानकर काम सबुथिरे अछि हला जोंदि खाली विभिन्न प्रकार हमर एनवायरनमेंट अछि डेव अछि क्यूए अछि सबुथिरे कोड डिप्लॉय करियो सेमानकर काम सेमाने इधर मैनुअली करंतु कि सेमाने दे आर यूजिंग सम टूल्स आल्सो दैट इज अप टू देम Okay. आज के लिए Azure DevOps असलानी Jenkins असलानी Kubernetes. हाँ Jenkins build. using Jenkins तो कोड डिप्लॉय करिया संगे संगे तमर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चलला जब कुछ नहीं ठीक है प्रियंका Yes. ओके थैंक यू गाइस Thank you, sir.